आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, यानी जब हमारा स्टमक से होकर अब फूड ने कहाँ पे चले जाना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडेनियम। के अंदर सबसे पहला जो पार्ट जहाँ पे फूड इंटर होगा उसको क्या कहते हैं, डोडेनियम। Here bile is added to the food through the bile duct. Bile is produced in the liver and stored in the gallbladder. Bile कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे पास लीवर के अंदर प्रोड्यूस करता है बाइल, और ये बाइल पे आगे स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर। Bile neutralize stomach acid and emulsify fat, break them to the tiny drop. Emulsifying increase the surface area of the food for the enzyme to work on. Pancreatic juice from the pancreas is also added to the food in the duodenum. However, from the mouth to the stomach, we have seen virtually no fats be digested. This will change as we move into the small intestine and learn how the secretions of the pancreas help in the digestive process. Chemical digestion kicks into high gear as we move into the first section of the small intestine, which we previously learned is called the duodenum. The duodenum is the area where many digestive juices enter the digestive tract. Now we see here that the pancreas is a triangular-shaped gland that extends across the abdomen, and it sits somewhat behind the stomach. The pancreas is a vital digestive organ because it produces a variety of enzymes that break down all of the major food groups. These enzymes are secreted into the duodenum along with a high concentration of bicarbonate. Bicarbonate makes the pancreatic secretions alkaline in nature. And this flow of alkaline fluid into the small intestine helps to neutralize the acidic chyme that comes from the stomach. We previously learned that chyme is the term that we use for the partially digested food mass that's just passed out of the stomach. Neutralizing this acidic chyme provides a better environment for the activation of the pancreatic enzymes. Now, we will look at the digestive enzymes that come from the pancreas in just a moment. But before we do, it's important to note that the pancreas also has an endocrine function. Now, we previously learned that a gland can be either an exocrine gland, meaning that it secretes substances out through a duct. When food enters the duodenum, it is deluged by pancreatic juice, which is defined as the alkaline solution of the pancreas containing enzymes that aid in the digestion of proteins, carbohydrates, and fats. So because all of the major nutrients are either completely or partially broken down by enzymes from the pancreas, we see just how vital this organ is to digestion. Now, this pancreatic juice contains enzymes that complete the digestion of starch, called pancreatic amylase. However, pancreatic juice contains an enzyme that breaks down dietary fat molecules called pancreatic lipase. Pancreatic juice contains enzymes that complete the digestion of starch called pancreatic amylase. It also contains pancreatic enzymes that complete the digestion of protein. The end product of digestion are glucose, amino acid, fatty acid, and cholesterol. These molecules are absorbed in the bloodstream through the wall of the small intestine. अब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा ये चीज़ें। दर कैरिड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इन द ब्लड प्लाज्मा, और फिर ब्लड प्लाज्मा की फॉर्म में पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द, यानी हमारे ब्लड जहाँ ब्लड के अंदर ये चीज़ें मिक्स होकर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें हमारी ब्लड के अंदर मिक्स होकर हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी, एक टाइप ऑफ एनर्जी मिल गई हमें, और ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड एंड कवर्ड विद द थाउजेंड ऑफ टाइनी प्रोजेक्शन कॉल्ड वैली। अब वो हमारे जो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो अगर आप देखें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो वो किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास रोल मोल हुई होती है। इनको क्या कहते हैं, इनको विली कहते हैं। वैली इज हैव वेरी थिन वॉल एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्यों इस तरह की होती हैं, क्योंकि ताकि हमारी जो फूड है वो इजीली, जितना ज़्यादा, चाहे ज़्यादा हो चाहे थोड़ा हो, यूँ नहीं है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो जाएगी। ये इनकी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इसके अंदर स्पेस ज़्यादा होती है फूड को रखने की। फूड स्टे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन 5 to 6 आवर। हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी देर तक रह सकता है, 5 से 6 घंटे रह सकता है। अनडाइजेस्टेड मटीरियल पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। Small organ lying at the point where the small intestine and small and the large intestine join. अपेंडिक्स वो जगह, वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन
दोनों मिल रही होती हैं तो उनके बीच में क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। इन ह्यूमंस द अपेंडिक्स हैज़ नो फंक्शन, इंसानों के अंदर अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं होता। हाउएवर इन मैनी हार्बीवोर्स सच एज हॉर्सेस एंड रैबिट्स द अपेंडिक्स इज मच लार्जर। लेकिन अगर हम लोग हार्बीवोर्स देखें जैसे हॉर्स है या रैबिट है, ठीक है, इसके अंदर अपेंडिक्स बहुत बड़ा काम कर रहा होता है। इट एनेबल दैट टू डाइजेस्ट सेलुलोज प्रेजेंट इन द प्लांट्स है, क्योंकि जो लोग हॉर्स है या रैबिट है ये प्लांट्स को खाते हैं तो इनके सेलुलोज को भी डाइजेस्ट होना होता है, तो ये अपेंडिक्स करता है। Appendix, which is considered as a useless organ, has the ability to revive good bacteria present in human body. When a person is affected by stomach disease or infection or diarrhea, there are several chances for the good bacteria present in his gut to get killed by the infection. However, it's been observed that appendix can be used to revive and help to grow the vital bacteria, thus restoring the gut health of the affected human. Large intestine क्या करता है? The material that pass into the large intestine consists mainly of water, vegetable fiber and cellulose from the plant cell wall. This is called roughage. अब देखिए इंसान की बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि हम लोग बेटा ग्रीन मटेरियल जितना भी खाते हैं वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे हम लोग साग वगैरह खाते हैं शौक से, पत्ते वगैरह, पत्ते ही हैं ना वो बेसिकली, इसके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है, तो हमारी बॉडी सेलुलोज हजम नहीं कर सकती। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक कुव्वत रखी नहीं है, ठीक है। तो जैसा हम लोग खा रहे हैं ना वैसे का वैसे वो निकल आता है, उसने कोई डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी से, ठीक है, उसके अंदर कोई डाइजेशन वगैरह। तो वो वाटर या हमारे पास वेजिटेबल फाइबर या कोई प्लांट के मुँह में जो पत्ते वगैरह खाए हुए हैं जिससे साग वगैरह खा लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे इसको इनको रफिश कह दिया जाता है। और ये जो कि बॉडी प्लांट ह्यूमन की बॉडी डाइजेस्ट ना कर सके उसको रफिश कहते हैं, ठीक है, ये प्लांट वगैरह को, ठीक है। तो ये ऐसे ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में से हमारे फीसेस की फॉर्म में मूव आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। वाटर इज absorbed through the wall of the large intestine in the blood leaving the blood लिविंग बिहाइंड सेमी सॉलिड फीसेस। ये जो वाटर है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है और पीछे रह जाती है फीसेस। फीसेस आर स्टोर्ड इन द रेक्टम। फिर ये फीसेस जो है वो हमारे रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाती हैं कितने तक, 12 to 24 आवर तक ये फीसेस हमारे रेक्टम के अंदर स्टोर रह सकती हैं। मसल इन द वॉल ऑफ द रेक्टम कंट्रोल द रिलीज ऑफ द फीसेस थ्रू द एनस। दिस इज कॉल्ड इजेक्शन और डिफेक्शन। Question from 1 to 7 on page number 45. What is the duodenum? Where is the bile made? What jobs does bile do? Where is pancreatic juice made? Where is intestinal juice made? Name the enzyme in pancreatic juice. Explain what they do. Name the enzyme in intestinal juice. Explain what they do. Open your page number 45 and mark your answers. First answer, start from first line. The first part of the small intestine is called duodenum. Second answer, start from second line. Bile is produced in the liver and stored in the gallbladder. Third answer, start from here. Bile neutralizes stomach acid and emulsifies fat, break them into tiny droplets. Fourth answer, start from fifth line. Pancreatic juice from the pancreas is also added to the food in the duodenum. Fifth answer, start from next para. The walls of the small intestine produce intestinal juice, which, like pancreatic juice, contain a variety of enzymes to digest different food material. 6 and 7. A and B part start from these points: amylase, protease, lipase, carbohydrates. You have to complete to learn 4 points of answers of questions 6 and 7, both A and B part. Okay. Next, question number 8 and 9 on page number 46. What are the end product of the digestion of food? Where is the appendix? Explain why the appendix of a rabbit is much larger than the appendix of a human. Here is the answer of question number 8. This page of first line, the end product of digestion are glucose, amino acid, fatty acid and glycerol. Ninth answer is appendix. Complete, learn complete para of appendix of question number 9.